So let's go to the new topic then. That is three-dimensional rectangular block subjected to normal stresses. Now, all of you, we have studied the types of stresses. The types of stresses being normal stress and the shear stress. Only two types of stresses we have seen: normal stress and shear stress. So normal stress may the perpendicular to the surface, and shear means parallel, tangent or parallel to the surface. So right now we have a three. Right now, whatever the forces, problems we have solved, the stress was acting only in one direction. Stress was acting only in one direction, and that's why all were axial problems or uniaxial loading. They are subjected to uniaxial load. Now we have studied this particular case, uniaxial load and everything. Now let us go for three-dimensional object when it is subjected to stress in all three directions. The stress is there in all three directions. So now how to deal with this kind of object? Okay. Now before we go to that object, let us understand when we apply load in one direction, what happens to the other dimension? What happens to other dimensions? Okay. Now I'm doing one thing. For example, let's say I have a rectangular bar. First case हम लोग वही देखते जो अभी तक हमने नहीं देखा कि I have a rectangular bar. Okay, and I'm applying some load P. This particular bar has some cross section. I'm drawing the cross section over here. Let's say this is the breadth and this is the depth. Okay. What will happen when you pull this particular rod? क्या होगा? ये rod को अगर तुमने pull करना चालू किया, after pulling you will get this kind of shape. The length of this particular rod will increase, right? Rectangular bar है तो उसका length तो बढ़ेगा, but उसका cross section कम होता है. ये सब ने हमने पढ़ा है, right? सबने पढ़ा ये कि length जो था पहले वो L था, अभी जो length है वो L plus delta L है. And because of this there is some change in the cross section as well. तो cross section में दोनों dimensions change हो चुके हैं, right? The new breadth will be B minus delta B, and the new depth will be D minus delta D. All of you agree this, right? ये सबको पता है. Now, what is the relation? What is your Poisson's ratio we have defined? Can anybody tell me what is Poisson's ratio? Yes, sir. Lateral strain upon longitudinal strain. तो अभी यहाँ पे lateral क्या है? The lateral is delta L upon L. Oh, sorry. The delta D upon D. And there are two lateral things, right? Now, दो Yes, lateral things. So I can write down minus delta B upon B upon the longitudinal is delta L upon L. Or else I can also write down minus delta D upon D depth, and this is delta L upon L. Barabar? Understood? So if I want to write down the lateral strain, in general I am writing the lateral strain is equal to mu times the longitudinal strain, right? Now this is the formula which we are going to use. देखो ये हो गया एक ही डायरेक्शन में लोड था तो ऐसे कुछ तो हुआ कि बाकी दो डायमेंशन चेंज हो गया, मतलब एक्चुअली तीनों डायमेंशन चेंज हुए यहाँ पे, लेंथ भी चेंज हुआ, ब्रेड्थ भी चेंज हुआ, डेप्थ भी चेंज हुआ, बट द इफेक्ट वाज ड्यू टू ओनली वन फोर्स. ओके, नाउ लेट अस फिगर आउट कि अगर ये थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है एंड उसको तीनों डायरेक्शन पे अगर स्ट्रेसेस एक्ट होता है तो हाउ दिस डायमेंशंस आर गोइंग टू चेंज. फॉर दैट लेट अस टेक अ cubical or a rectangular parallelopipe. So let's say I have a cube like this. Okay. So this is a cube.
थोड़ा सा क्यूब गलत आया, लेट मी करेक्ट इट. Okay, so this is a cube. Now on this particular cube, I have multiple stresses acting. Now let us define some axes first. इसके लिए कुछ axes define करते हैं हम लोग. Let us take this as my x-axis. Okay. This is z-axis, and this is y-axis. I have three-dimensional object and I have three dimensions here, right? अभी यहाँ पे इसके ऊपर तीन स्ट्रेसेस एक्ट कर रहा है. तीन स्ट्रेसेस कैसे? तो एक स्ट्रेस है x डायरेक्शन में, so it is acting on this particular line. Okay, so this is one stress acting, let's say sigma x. Similarly, स्ट्रेस हमेशा इसे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे हमने p यहाँ पे दिया है कि इधर एक इक्वल एंड अपोजिट, राइट? सिमिलरली यहाँ पे भी स्ट्रेस ऐसे ही होगा. सो आई एम ड्राइंग द सॉरी, this is my sigma x. Along this there will be sigma z along z axis. So write down, let's say sigma z, and नीचे वाले फेस पे उसका अपोजिट रिएक्शन होगा, which is sigma z. Okay, and along y there will be one stress on this particular plane, जो पीछे का plane है. So drawing the on this particular plane sigma y, and on here on this particular plane it is sigma y. Can you understand this? ये तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेसेस एक्ट कर रहे हैं, हर फेस पे एक स्ट्रेस एक्ट कर रहा है. ठीक है, सिग्मा z in this direction, sigma x in this direction and sigma y in that direction. Okay, so all of you can understand कि ये तीनों स्ट्रेसेस नॉर्मल स्ट्रेसेस है जो परपेंडिकुलर टू द फेस एक्ट कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ तो यू कैन सी कि my sigma z is perpendicular to this face, my sigma x is perpendicular to this face, and my sigma y is perpendicular to this face. Okay, you can see they are perpendicular to each other. Now what is going to happen? अभी यहाँ पे forget about x, y and z. Let us focus on x. ठीक है, let us focus on x. I am calling the dimensions as, let's say this dimension is x dimension, x axis में इसलिए x dimension है ये. ठीक है, ये dimension y है because y के along है, and ये dimension z होगा because z के along है. ठीक है, तो x y z मैंने लिया. Okay, now because of sigma x, which dimension will increase and which dimension will decrease? Can you tell me? Because of sigma x, forget about sigma y, sigma z, focus on only one stress. Because of sigma x stress, which is tensile, which dimension will increase and which dimension will decrease out of x and y and z? Yes, lateral dimension increase होगा सर. कौन सा है lateral? वही तो पूछना है. horizontal सर, horizontal increase होगा और वो, अरे horizontal ये मत बता, x y z में कौन बढ़ेगा कौन कम होगा? x इंक्रीज होगा, y कम होगा. x का डायरेक्शन टाइप इंक्रीज होगा सर. हाँ, और y और z डिक्रीज होगा. Okay, very good, very good. So as you know, because of sigma x, x is going to increase and y and z are going to decrease. बराबर, इतना सबको पता चला कि x increase होने वाला है, y z decrease. Why I'm getting this all? Okay, x increase होने वाला है, y और z decrease होने वाला है. Okay, so now let us solve this कि अगर x बढ़ता है, ठीक है, तो there will be some change in x. ठीक है, so मैं लिखता हूँ यहाँ पे strain, मैं डायरेक्टली strain लिखने वाला हूँ. तो डेल्टा x अपॉन x, ठीक है, डेल्टा y अपॉन y एंड डेल्टा z अपॉन z, ये तीनों डायरेक्शन में कुछ ना कुछ चेंज आने वाला है. तो आई एम गोइंग टू राइट डाउन. नाउ टेल मी, बिकॉज ऑफ सिग्मा x क्या हुआ? तो बिकॉज ऑफ सिग्मा x ये हो गया, बढ़ गया. तो आई एम राइटिंग सिग्मा x बाई ई. स्ट्रेन इज नथिंग बट स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस. ये सिंपल फॉर्मूला हमने पहले दिन पढ़ा. सिग्मा x द स्ट्रेन, दिस इज नथिंग बट स्ट्रेन ना. डेल्टा x अपॉन x क्या है? स्ट्रेन है, which is nothing but what? Which is nothing but change in dimension of the molecular dimension. Yeah, it is stress upon strain. ये हो गया x के लिए. हाँ, अभी y में क्या चेंज होएगा? Because of sigma x, what is the change in y? y reduce होगा. y reduce होगा, तो y lateral है x के लिए.
मतलब जब मैं सिग्मा एक्स की बात कर रहा हूँ तो y क्या लैटरल है, बराबर। तो लैटरल स्ट्रेन कैसे लिखते हैं हम लोग, लैटरल स्ट्रेन कैसे लिखते हैं, म्यू टाइम्स लॉन्जिट्यूडनल, और लॉन्जिट्यूडनल कौन है, सिग्मा एक्स, ये वाला लॉन्जिट्यूडनल है ना, बिकॉज राइट नाउ मैंने y और z के बारे में कुछ भी नहीं लिखा है, आई एम ओनली फोकसिंग ऑन सिग्मा एक्स, forget about y and z are there, y and z are not there right now. तो right now अगर y and z are not there, sigma y को जो sigma y में जो चेंज आएगा, can I write down this is mu times sigma x by e and that has to be negative because वो डिक्रीज होने वाला है, can I write down this way, करेक्ट है ये, कितना कम होगा y, तो इट इज म्यू टाइम्स लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडनल x था इसलिए मैंने सिग्मा x by e लिखा है, बराबर। और z में क्या होगा, z में भी वैसे ही होगा, माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा एक्स बाई ई, सॉरी सिग्मा एक्स बाई, सर म्यू टाइम्स लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन है तो उधर पे सर ई की जगह एक्स आएगा ना, ई के जगह एक्स आएगा, मतलब आई डिडंट गेट यू सर लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन मींस चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। हाँ तो वही है ना, डेल्टा एक्स बाई एक्स है ना लॉन्जिट्यूडनल, सर ये सेकंड लाइन में, हाँ वही है, ये लॉन्जिट्यूडनल है कि नहीं, यस सर, तो वही लिखा है ना ये, अच्छा उसका वो मैंने sorry उसको sir. सिग्मा के टर्म्स में लिखा है, यस सर, मैंने उसको डेल्टा एक्स के टर्म्स में नहीं लिखा है, मैंने सिग्मा के टर्म्स, मीनिंग उसका वही है, ओके ओके ओके। और लैटरल क्या, so now this I have written for this particular case, right? Now let's write down for sigma y, अभी मैं किसके लिए लिखना चाहता हूँ, सिग्मा y के लिए, ये मैंने लिखा, ये तीनों में चेंज आएगा, दिस इज बिकॉज ऑफ सिग्मा x एक्टिंग अलोन, नाउ फॉरगेट अबाउट सिग्मा x, हमने सिग्मा x का इफेक्ट लिख दिया, नाउ फोकस ऑन सिग्मा y, बिकॉज ऑफ सिग्मा y कौन बढ़ेगा, सिग्मा y की वजह से y बढ़ेगा, x और z कम होगा, सबको इतना समझा, सिग्मा y की वजह से y बढ़ेगा और x और z जो बचते हैं वो कम होने वाले, राइट। तो y अगर बढ़ता है तो y के लिए क्या आएगा, वो सिग्मा y अपॉन ई, पॉजिटिव, राइट ना, वो तो पॉजिटिव आएगा, बढ़ गया ना सिग्मा y अपॉन ई, हाँ बट वो y जब बढ़ रहा था तो y ने इफेक्ट क्या किया x में, x को कम किया, कितना कम करेगा वो x को, माइनस म्यू टाइम सिग्मा y बाई ई, और z को भी कम करेगा, कितना कम करेगा, माइनस म्यू टाइम सिग्मा y बाई ई, गॉट इट, क्या लिखा मैंने, सबको समझा यस सर, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बट दिस इज समथिंग टू अंडरस्टैंड कि जब मैं y बढ़ता है तो y का इफेक्ट खाली अकेले y पे नहीं आता, वो x और z पे भी आता है, तो जब y बढ़ता है तो x और z डिक्रीज होते हैं, कितने टाइम डिक्रीज होते हैं, म्यू टाइम्स डिक्रीज होते हैं, बिकॉज मेरा फॉर्मूला ही है, लैटरल इज इक्वल टू म्यू टाइम्स लॉन्जिट्यूडनल, तो लॉन्जिट्यूडनल अगर y है तो z और इसमें म्यू टाइम्स चेंज आएगा, इसलिए मैंने देखो म्यू टाइम सिग्मा y बाई दोनों से माइनस कर दिया, नाउ देयर इज z आल्सो, ये दोनों अकेले नहीं एक्ट कर रहे हैं, z भी एक्ट कर रहा है, तो z की वजह से क्या होगा, z की वजह से क्या होने वाला है, z की वजह से z में इंक्रीज होने वाला है और x और y डिक्रीज होने वाला है, सो लेट्स गो फॉर z, लेट्स गो फॉर z, या सो अभी z में, तो z में क्या हो रहा है, मेरा z बढ़ेगा तो मैं z के लिए लिखता हूँ सिग्मा z बाई ई, लेकिन ये जो ये बढ़ गया है ना, इसके म्यू टाइम्स दोनों में से कम होगा, किस में से कम होगा, y में से कम होगा, म्यू टाइम्स सिग्मा z बाई ई, एंड किस में कम होगा, इसमें म्यू टाइम्स सिग्मा z बाई, so what is the total effect now, can you see, इसलिए मैंने अलग अलग कलर भी यूज किया है, now can you see the total effect, because of all three x y z what will be the effect on dimension x, डायमेंशन x में देखो सिग्मा x बाई पॉजिटिव है, मतलब सिग्मा x की वजह से सिग्मा x वो बढ़ने वाला है, बट सिग्मा y एंड सिग्मा z की वजह से x कम होने वाला है, इसलिए माइनस माइनस आया, राइट। y में क्या होगा, सिग्मा y की वजह से y डायमेंशन बढ़ेगा, बट x एंड z की वजह से वो कम होगा, इसलिए म्यू टाइम्स कम हो गया, देखो, एंड सिग्मा डेल्टा z में क्या हो रहा है, z की वजह से बढ़ेगा, x और y की वजह से कम होगा, सिंपल है, फॉर्मूला लिखने में बहुत इजी है, डेल्टा x बाय x इज, जो x है तो सिग्मा x बाई ई आएगा, बाकी सब म्यू टाइम्स माइनस करेंगे, म्यू टाइम सिग्मा y बाई ई, म्यू टाइम सिग्मा z बाई, अगर मैं डेल्टा y बाय y लिखता हूँ तो इट इज सिग्मा y बाई ई एज इट इज आएगा, माइनस म्यू टाइम सिग्मा x बाई माइनस म्यू टाइम सिग्मा z बाई, इफ आई एम राइटिंग डेल्टा z बाई z, सिग्मा z बाई ई आएगा, माइनस म्यू टाइम सिग्मा x बाई माइनस म्यू टाइम सिग्मा z बाई, सिग्मा y बाई, गॉट इट, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, यस सर, नाउ कैन यू कैलकुलेट कि ये तीनों का इफेक्ट एक साथ हमने कैलकुलेट किया, ठीक है, तो ये इसी को हम लोग बोलते हैं द टोटल स्ट्रेन इन x डायरेक्शन, दिस इज टोटल स्ट्रेन इन y डायरेक्शन एंड दिस इज टोटल स्ट्रेन इन z डायरेक्शन।
Now in this case, if they ask you to find out the volumetric strain, in this case, if they ask you to find out volumetric strain, तो what is volumetric strain? अभी एक्स वाई जेड अगर चेंज होगा तो वॉल्यूम में चेंज आएगा कि नहीं क्यूब के? आएगा आएगा ना. तो कैसे फाइंड करेंगे वॉल्यूमेट्रिक चेंज? सो द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन वी राइट EV, बेसिकली इट इज इक्वल टू EX प्लस EY प्लस EZ. ठीक है. एंड इसका मीनिंग है एक्चुअली डेल्टा V बाई V, दैट इज इक्वल टू डेल्टा X बाय X प्लस डेल्टा Y बाय Y प्लस डेल्टा Z बाय Z. Got this? So you can find out the volumetric strain by using this particular relation. Okay. अभी ये जो volumetric strain है उसके लिए हम लोग कुछ और थोड़ा simplification कर सकते हैं. So see here how I can write down. I will write down EV volumetric strain is equal to what is delta X by X? I know the formula ना, यहाँ पे है formula. लिख दिया मैंने. क्या क्या लिख दिया मैंने? Sigma X by E, right? Minus mu times sigma Y by E आएगा प्लस सिग्मा y बाई ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा x बाई ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा z बाई ई प्लस उसमें क्या ऐड करना है? डेल्टा z. तो प्लस सिग्मा z बाई ई प्लस प्लस नहीं माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा x बाई ई माइनस म्यू टाइम्स सिग्मा y बाई ई. नाउ सी हियर क्या क्या कॉमन है इसमें? तो देखो सिग्मा एक्स वाले दो टर्म है, सिग्मा वाई वाले दो टर्म है और सिग्मा जेड वाले दो टर्म्स है. ठीक है. तो मैं क्या क्या कॉमन निकाल सकता हूँ? पहले तो सब में से 1 बाई ई कॉमन ले लेते. राइट. इधर क्या बचा? एक सिग्मा एक्स, इधर माइनस म्यू सिग्मा एक्स और एक माइनस म्यू सिग्मा एक्स. राइट. तो आई कैन राइट डाउन दिस एज, मैं थोड़ा रीअरेंज करके लिखता हूँ. सिग्मा एक्स वाले टर्म एक साथ लिखता हूँ. तो सिग्मा एक्स कॉमन 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई. राइट. बराबर कि नहीं? सबको समझा ये कैसे लिखा? सिग्मा एक्स इधर एक है, दिस ईयर, दिस इज सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा एक्स, दिस इज सिग्मा एक्स. अगर मैंने सिग्मा एक्स बाई कॉमन लिया तो बचा क्या? इधर 1 बचा, इधर म्यू, इधर म्यू, तो 1 माइनस 2 म्यू हो गया. राइट. प्लस अगर मैंने सिग्मा वाई बाई कॉमन लिया तो क्या बचेगा? वैसे ही सेम 1 माइनस 2 म्यू बचेगा. एंड अगर मैंने सिग्मा जेड बाई कॉमन लिया तो क्या बचेगा? वापस से 1 माइनस 2 म्यू बचेगा. ठीक है. तो कैन आई सिंप्लीफाई दिस? आई कैन राइट डाउन दिस एज, अगर मैंने 1 माइनस 2 कॉमन लिया तो ये आएगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड अपॉन ई इंटू 1 माइनस 2 म्यू. हैव यू अंडरस्टूड दिस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला? Did you get this? ये डेरिवेशन नहीं है एक्चुअली, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. ये पूरा चीज हमें हर एक न्यूमेरिकल में वी कैन सॉल्व दिस वे. अगर मुझे फाइंड करने बोला है कि यू फाइंड आउट द स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, आई कैन फाइंड आउट एंड एज अ इफेक्ट ऑफ 3. तो दिस पर्टिकुलर सिस्टम वी कॉल ट्राइएक्सियल सिस्टम. ट्राइएक्सियल सिस्टम मतलब यहाँ पे तीनों एक्सिस पे कुछ ना कुछ स्ट्रेस ऐड कर रहा है. नाउ ऑल द स्ट्रेसेस इफ यू हैव फिगर्ड आउट कि मैंने जो भी स्ट्रेसेस लिए वो सब टेंसाइल स्ट्रेसेस थे. टेंसाइल मतलब जो इंक्रीज कर रहे थे. राइट. What if the stresses are given, one of them is given compressive, what I'll do? अगर इसमें से कोई एक compressive होता तो क्या होता? Yes, anybody? बाकी दो इंक्रीज होता. या तो उसमें साइन चेंज हो जाता है. तो हमें करना क्या है? ये हम लोग फॉर्मूला एज इट इज याद करेंगे. Only if the sigma, so for example, in one of the stress is given compressive, तो we will take their value negative. मतलब सिग्मा z अगर compressive है तो मैं जिधर इधर सिग्मा z है सब में उसका नेगेटिव वैल्यू डालूंगा. So that वो अपने आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. Got it? हमें कुछ ज्यादा सोचना नहीं है. फिर टेंसाइल है तो स्ट्रेस पॉजिटिव लो, कंप्रेसिव है तो स्ट्रेस नेगेटिव लो, you will give the, it will give you the same answer. करेक्ट आंसर मिलेगा. Got it? सबको समझा ये फॉर्मूला कैसे आया? Any doubt in this? Now this is triaxial system. अगर हमें बायएक्सियल सिस्टम दिया, बायएक्सियल मतलब दो ही एक्सिस पे स्ट्रेस है, तो मतलब तीसरा कोई एक जीरो रहेगा, नथिंग एल्स. मतलब हमने पूरा एक ट्राइएक्सियल के लिए अगर तुम्हें फॉर्मूला पता है, एंड इफ द स्ट्रेसेस आर एक्टिंग ओनली इन टू डायरेक्शन, सपोज जेड है ही नहीं तो जेड वाला कंपोनेंट जीरो आएगा सब जगह पे, एंड यू विल गेट द सेम कैलकुलेशन. ओके. बट इट डज नॉट मीन अगर जेड डायरेक्शन में स्ट्रेस नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि जेड बढ़ेगा या कम नहीं होगा, बिकॉज एक्स और वाई का भी जेड पे इफेक्ट आता है.
राइट, वी नो दैट। अगर फॉर एग्जांपल z नहीं है, लेट्स से अगर मेरे पास z 0 दिया तो मुझे क्या हो जाएगा, ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, राइट, बट ये दोनों तो है ही ना, इनके वजह से z चेंज होगा कि नहीं हाँ होगा, सर। अंडरस्टैंडिंग इट। तो बाय एक्शियल और ट्राई एक्शियल में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, वी कैन रिमेंबर द फॉर्मूलाज फॉर ट्राई एक्शियल लोडिंग एंड यू कैन सॉल्व एनी ऑफ देम, यूनि एक्शियल भी सॉल्व कर सकते हो अभी, ओके, understood this? So this is very very important slide, you have to remember all those things to solve, sorry, to solve this numericals, okay. So I'm writing here, very important. Now let's go to the for solving some numerical based on this particular part which we discussed right now. Yeah, so this is a question. A rectangular block is there of 250 cross 100 cross 80. So let's draw that. हमें अभी डायग्राम दिया नहीं है, मोस्ट ऑफ द केसेस में डायग्राम दिया नहीं रहेगा, यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, और टू ड्रॉ द डायग्राम। सो कैसे ड्रॉ करेंगे अभी डायग्राम में, 250 क्रॉस 100 क्रॉस 80। सो लेट्स से दिस इज 250, this is 100 and this is 80, okay. So I am drawing the block, sorry, okay. So in this particular case you have to clearly identify कि कैसे टाइप का स्ट्रेसेस तुम्हें दिया है, for that this drawing a block is important. Now see, a rectangular block 250, I'll write down this as 250. So let's say I am writing x as 250, what is my y as let's say 100, and what is my z, let's say 80, okay. Yeah, now they are asking you okay, the loads are acting as shown. Loads अभी कितना कितना load act कर रहा है, तो let us take the load 480 kilonewton tensile in the direction of length. In the direction of length मतलब ये length है, तो 480 kilonewton is acting in this direction. So I'll write down that is in x direction, so I'll call it as px. Now they have not given sigma value, they have given load, so that is why px मैंने लिखा है, it is 480 kilonewton, okay, and it will act in this particular phase also, equal and opposite. Tensile बोला इसलिए मैंने outward बनाया, so this is px. What about the other case, 900 kilonewton, again tensile, but in the on the face 250 cross 80, you can see this is the face 250 cross 80, तो यहाँ पे tensile load ऐसा act कर रहा है, so we'll assume this is in the z direction, so therefore I'll write down pz is 900 kilonewton, okay, this is also pz. Now what is the third case, 1000 kilonewton compressive in the 250 cross 100, 250 cross 100 वाला ये face है, so it is along the y axis, so ये होगा along y axis, so this is my py, but I will take this py as negative, so direction उसका reverse होगा, why reverse, why reverse, because it is compressive. compressive, very good. So I can write down, ये draw ऐसे करूंगा इसको, this is py, okay, this is py. So what I'm getting py as minus 1000, okay, एक मिनट, हेलो हेलो
So as you can see, yeah. So I know these are the values given to me. Py, Pz, सब कुछ का सबका values मेरे पास पता है. This is also in kilonewton. Let us calculate all the sigma values. So I will write down the very first one is sigma x. Now what is sigma x? It is load px upon the area. Now which area I will take? You can see this px के लिए कौन सा perpendicular area है? So this is the area where it will be 100 multiplied by 80. So px divided by area, which is nothing but 480 kilonewton को convert करना पड़ेगा तुम्हें. So I will be converting in kilonewton to meter Newton, and then it is 80 multiplied by 100. So you will calculate this is in sigma x. You will get some value in MPa. Okay. Then you will calculate sigma y, that is Py upon again area. Py is how much? You are having negative value. So you will write down Py is negative. How much? 1000 kilonewton है इसलिए 10⁻³ divided by area. अभी py के लिए this is the area where it is perpendicular, so therefore it is 250 multiplied by 100. Okay, again you will get minus answer something minus MPa, right? And you will get the sigma z as pz upon area. Okay, pz is how much? 900 kilonewton, so 900 into 10⁻³ upon the area. You can see this is z is perpendicular to this, so the area is 80 multiplied by 250, right? Again you will get some answer in MPa. So your sigma y is negative, rest all are positive. Then what you are what they're asking you to find out, calculate the volumetric strain. So if you want to find out the volumetric strain, you can directly find out the volumetric strain. कैसे find कर सकते हैं? जो अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था, sigma x plus sigma y plus sigma z upon E into 1 minus 2 mu. Now you know the value of sigma x, y, z. You know the value of mu and value of E as well. You can see the value of E is 200 into 10⁻³ GPa into MPa में convert करेंगे तो, and this mu value is also known to you. You can just directly substitute and get the answer. This was very simple question. Even in gate and everything, they may ask you this kind of very simple question to be calculated. Okay, so easy you can calculate. Sometimes they may ask you to find out the changes in x, y, z. They may ask you to find out what is delta x. Okay, so in that case you have to write down the equation. So you have to write down this way. Delta x upon x is equal to sigma x by E minus mu times sigma y by E minus mu times sigma z by E. Now you know all these values. Either you can do this way, 1 by E common ले लो. It is mu x minus mu नहीं, sigma x minus mu times sigma y minus mu times sigma z. You have to put it according to the sign. यहाँ पे sigma y negative है, तो sign का ध्यान देना यहाँ पे जरूरी है. Into delta x upon x. Now here x is known to you. Original x value is 250. So you can calculate the delta x accordingly. Similarly, you can calculate delta y and you can calculate delta z. Okay. Then once you know volumetric strain, you may also calculate change in volume. So what is change in volume? You can write down this way कि ये है delta v by v, and that is equal to some answer. So whatever the answer you will get here, multiply by volume. So this volume you can see here, multiply and get the answer for change in volume also. So they can ask you anything based on this particular question. So once you can figure out what are the stresses values, then you can find out easily. I hope. So sigma y negative डालने के ना? हाँ, negative डालना पड़ेगा, because उसका value negative है ना, तो जहाँ जहाँ पे sigma y है उधर वो minus आंसर डालेगा. Okay, so quickly give me the answers, फटाफट करो. सर सिग्मा y में एरिया 250 into 80 आएगा ना? सिग्मा y में? हाँ सर, डायग्राम के हिसाब से 250 into 80 आना चाहिए. वो गलत कर डायग्राम सकता हूँ, रॉन्ग है मैंने शायद. गलत किया रहेगा. You can correct me. Okay, सिग्मा y वाला ये है तो it is 250 into 80 आएगा. Very good. 250 into 80 आएगा. सिग्मा z वाला भी सर 250 into 100 आएगा फिर. 18. Okay. Maybe I may go somewhere wrong in the writing part.
you may correct me. Now this is correct. 250 into 80 for upper face and the 250 into 100 for lower face. Okay. So give me the answers quickly. Sigma x, sigma y, sigma z. Similar kind of mistakes are expected even from you as well, because जैसे मैंने अभी घाई में वो areas wrong किया, वैसे तुमने अगर किया exam में तो वो answers wrong आता है. Okay, so be careful about writing the area properly. Sigma x 60 megapascal. Okay, sigma x is 60 MPa. So we Yes, got sir. this as 60 MPa. Next, somebody, one more is giving the answer. Sigma y is minus 40, right? minus 50. -50 आता है. ठीक है. I don't know. You have to tell me the answers. Okay, minus 50. And what about sigma z? 36. Is it correct? (36) is correct. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so now can you substitute the values here and get the answer for volumetric strain? So 60 minus 50 plus 36. 96 minus 50 is 46. 46 into 1 by 2 mu upon E. Done? Sir, I have a bit doubt regarding diagram. Can you please explain once? Diagram? Yes, sir. The figure. What doubt? See here, according to the explanation given in the problem, I have drawn the diagram. So what is the explanation given here? So for 480 in direction of length, that's correct. Then Yeah. 900 tensile on 250 into 18. That can you please check? Acha, I have made some mistake then. Okay. 250 into 80 बोला ना मैंने. Okay. Let me correct check it. अच्छा वो जो mistake किया था वही carry forward किया था, इसलिए इधर भी wrong लिखा था मैंने. हाँ, 250 into 80 मतलब you are saying कि this is not the 900 kilonewton, right? Very good. So who's this? love ja. Very good. Very good, love. You have correctly pointed out ki the mistake what we have done. So let me correct it. All of you see here. What is the mistake we have done? Ki this is not PZ 900. Actually PY must be 900, right? Na? Direction change हो जाएगा थोड़ा सा. ये सब direction change कर रहा हूँ. See here. Once again we'll read it. Otherwise the rest all everything will remain same. But यहाँ पे values change होंगे थोड़े से. तो क्या होगा देखो. 900 kilonewton tensile on 250 cross 80. तो I mark 250 and 80 अगर देखेंगे तो ये वाला होता है. तो ये होगा मेरा sigma y. ये मेरा होगा py 900 kilonewton and that is positive. Okay. तो ये py मेरा यहाँ पे 900 आएगा. 900 and वो positive है. ठीक है. इसका आंसर अभी चेंज हो जाएगा कुछ तो भी आंसर होगा मुझे पता नहीं है. ओके. एंड जो मेरा PZ है 1000 किलोन्यूटन ऑन 250 क्रॉस 100. सो दिस इज 250 एंड दिस इज 100. आई रॉन्गली मेंशनड इट इज 80. सो ये होगा मेरा कंप्रेसिव लोड PY. सो PY इज -1000. ओके. एंड दिस इज आल्सो PY.
in this direction. Oh, sorry, pz. मैं उसको y बोल रहा हूँ. pz is in this direction. Okay. So you will get pz के लिए यहाँ पे होगा वो minus 1000 upon 250 into 100 and 900 upon this. Now tell me the corrected answers. Yes, sigma y is 45. So you are saying this has 45 MPa. Okay. And sigma x to same ही रहेगा, nothing change. And what about this? This should be negative. Yes, love, can you tell me the answer? Akash is saying 40. But what 40, Akash? अच्छा, you are saying sigma z is 40. Very good. वो 40 आएगा. Minus 40 आएगा ना, but. Okay. Now. Yes, minus what? Yeah. So अभी corrected answers आएंगे. अभी calculate करो. Sigma x अभी यहाँ पे अगर addition करता हूँ मैं, तो 60 plus 45 minus 40, तो वो हो जाएगा upon e का वैल्यू कितना है 200 into 10 raised to 3 into 1 minus 2 into 0.25, so that is 1 minus 0.5, half हो जाएगा वो. ये होगा 45 by 4. How much is the answer? Final answer बताओ. Uh, 65 1.625 into 10 raised to 1.625 into 10 raised to minus 4. minus 4. 4. Okay. Now can you calculate the change in volume? It is equal to that same 1.625 into 10 raised to minus 4 into the volume. But volume क्या है? Volume is basically multiplication of 250 into 80 into 100 ना? कितना होगा ये? That will be in mm cube. Change in volume of this one. 325. 325 mm cube. Similar on the similar lines, now you can calculate delta x, delta y, and delta z, right? I hope ये part अभी कोई wrong नहीं होगा. So again, once again, as I have made the mistake in hurry, you should not make it because it will give you the wrong answers. On the similar line, I have one more question for you. That is the next question, 1.14, the last question for today. That is rectangular bar, again 100 mm, 50 mm, 250 mm long. So now I'll draw this carefully so that कुछ wrong नहीं जाएगा. This is a bar. This is 50 mm. Okay. So now you can say x as 250 mm long, y is 100, and z is 50. And z is 50. Okay. Now it carries a tensile load of 400 kilonewton. So now you can see I'm creating this as tensile load of 400 kilonewton. So I'm calling this as px. Okay, यहाँ पे opposite direction में py होगा, sorry px ही होगा, वो same. And what is in the y direction? See here now. There is a 4000 kilonewton compressive load on 100 cross 250. So this is 250 and this is 100. So ये वाला load है, right? And compressive है, so I will take this as pz downward 4000 kilonewton, and same way में ऐसे ऊपर होगा pz. Okay. Then 2000 kilonewton again tensile on 50 cross 250. So 50 cross 250 is this particular face. तो उस पे होगा y direction में. So I will write down this as my y direction, py. Okay, and that is py is 2000 kilonewton. That is 2000 kilonewton. Okay, understood this? So now I guess you can calculate sigma x, sigma y, sigma z, sigma x,
sigma y, sigma z. Then you can find out the, now here they are asking you change in volume. So the very first thing you will calculate the volumetric strain, then you will calculate the change in volume, and as an additional part you may also calculate the change in x, change in y, and change in z. Okay, now check if the first of all in this kind of question again पहली बार check करो कि वापस से कोई mistake है क्या जो तुमने बनाया, because otherwise if even a very small mistake in orientation will give you some of the wrong answers. Okay, so do not make any mistakes in those things so that your answer can be wrong. Understood this? Hello, have you understood this particular part? Yes, sir. नहीं